It is a day of immense pride for the officers of Indian Defence Estate Service, Indian Telecom Service, Indian Skill Development Service, and Indian Trade Service to call on the Honorable President of India. As we start our career for the service of the nation, it is a matter of huge honor for all of us to get the opportunity to meet and listen to the words of wisdom from the Honorable President of India. May I now request Dr. Ajay Kumar, Defence Secretary, for the welcome address. Honorable President of India, my colleagues from the Ministry of Communications, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Director General Foreign Trade, Director General Defence Estates, officials of the President's Secretariat, and young probationers. At the outset, I would like to record our deep gratitude to the Honorable President of India, who has kindly consented to meet the probationers from the four services, that is, the Indian Defence Estate Service, the Indian Telecommunication Service, Indian Skill Development Service, and the Indian Trade Service today. It is indeed a proud moment and also a profound privilege for the young probationers seated here to seek words of advice from the Honorable President. This would serve them as a guiding light as they start their career in the civil services and strive to become Karam Yogis for building a stronger, inclusive, and Atmanirbhar Bharat. Honorable President, ma'am, 3 batches of the Indian Defence Estate Service probationers are present today with us. As you are aware, the Indian Defence Estate Service is an organized central civil service with an earmarked mandate to manage all facets of defence land across the country and discharge duties connected with the municipal administration of 62 cantonments in the country. The probationers of the Indian Defence Estate Service, after completing their 15 weeks long foundation course training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in Mussoorie, undergo their 28-week long induction course training at National Institute for Defence Estates Management located in Delhi Cantonment. DGDE has been striving to enable the highest standards of quality of life for the citizens through efforts to reach the last person through inclusive, sustainable, technological interventions in cantonment areas. The successful conceptualization, development and implementation of the Each Havni project is a testimony to that. Further, to ensure efficient and optimum defense land utilization in India, DGDE has set up a Center of Excellence for Satellite and Unmanned Remote Vehicle Initiative at NIDEM. It leverages the artificial intelligence in satellite imagery, drone imagery, and geospatial techniques for effective land management and urban planning. I would like to submit that COE survey is the most advanced facility for using high technology in land management. Respected Madam, 2 batches of the Indian Skill Development Service are present here. As you are aware, after the formation of the new Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in 2014, the Indian Skill Development Service was notified in 2017 as a Group A Central Service under the administrative control of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The service officers are entrusted with coordinating all skill development efforts across the country, building the vocational and technical training framework, new skills, and innovative thinking. The direct recruits are selected from the engineering services examination conducted by UPSC. So far, 2 batches have joined Indian Skill Development Service. The first batch has undergone their 17-week foundation course at Administrative Training Institute, Mysore, and the second batch at Central Staff Training and Research Institute, Kolkata. Respected Madam, 3 batches of the Indian Telecommunication Service probationers are present here for the event. The officer trainees of the ITS cadre complete 104 weeks of induction course training at National Telecommunication Institute for Policy Research, Innovation and Training located in Ghaziabad.
The officers of ITS have been at the helm of affairs in managing technical as well as administrative activities of the Ministry of Communication. A few of the main activities of ITS officers include the formulation of telecom policies, security of telecom networks, issuance of licenses to telecom service providers and internet service providers, and bridging the digital divide. Respected Madam, 4 batches of Indian Trade Service are also present here. The Indian Trade Service is a Group A Central Civil Service, and the officers are recruited through the UPSC Civil Service exam. It is the only service which specializes in international trade and commercial diplomacy to promote India's interests. Director General of Foreign Trade under the Ministry of Commerce and Industry is the cadre controlling authority of the Indian Trade Service. The Indian Trade Service officer trainees are trained at the Indian Institute of Foreign Trade for a period of 9 months. Honorable President, once again, on behalf of all my colleagues present here, I express my heartfelt gratitude to you for giving us this opportunity. This is a great occasion when young probationers can pledge their dedication and commitment to public service in the gracious presence of the head of our Republic. Thank you, Honorable President, ma'am. May I now call upon Shri Gokul Mahajan, Officer Trainee of Indian Defence Estate Service, for sharing his training experience. Every great dream begins with a dreamer. Always remember, we have within us the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world. Honorable President of India, distinguished guests, and my fellow officer trainees. I, Gokul Mahajan of Indian Defence Estate Service, would like to begin by expressing my profound and heartfelt gratitude to the Honorable President for giving us time out of a busy schedule to address, guide, and inspire us today. It is a matter of great pride and privilege for me to have gotten this opportunity to present the vision of IDES and share the collective experience of each officer with the first citizen of the largest democracy in the world in this historic Rashtrapati Bhavan. Directorate General of Defence Estates, or DGDE, is the premier organization for effective land management and development of cantonment areas as model townships by deploying latest technologies, building capacities, and ensuring responsible administration. DGDE has been a flag bearer of path-breaking initiatives in the field of digital governance via eChhavni module and real-time record management. It has also acted as a catalyst in leveraging technologies such as drone-based land surveys and AI-based change detection module through recently established Center of Excellence at National Institute of Defence Estate Management. Ma'am, our training curriculum was an optimum mix of classroom lectures and attachments to equip the young officers with necessary knowledge base and field exposure in order to achieve the goals of national development. We begin with foundation course at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration at Mussoorie, which emphasized not only on academic pursuits, but also upon extracurricular activities, through which we were able to forge lifelong friendships and develop esprit de corps. Thereafter, we commenced our induction training at NIDEM, where we were introduced to statutes, rules and regulations required to administer the 62 cantonments of the country and management of defense land. Further, we were exposed to various field attachments that involved cantonment boards to experience the administration of cantonments, defense estate offices to understand the intricacies involved in defense land management, acquisition and hiring, command level offices to learn the essence of coordination and supervision, and finally, we concluded with our attachment at DG office that enabled us to grasp the technique of translating inputs to tangible outcomes resulting in policy decisions. We were fortunate enough to witness the Indian Armed Forces from a very close front during our attachments with Army at Ladakh, Navy at Visakhapatnam, and Air Force at Gwalior. I am thankful to NIDEM for nourishing and molding a very diverse cohort of probationers, and I firmly believe that our induction training has prepared us well for the challenges that lie ahead and infused in us the spirit to uphold the constitutional values. I would like to conclude by quoting the words of Woodrow Wilson, the father of public administration. There is no higher religion than human service. To work for the common good is the greatest creed. Thank you. Jai Hind. May I now call upon Shri Sanjay Bapat, Officer Trainee of Indian Skill Development Service, for sharing his experience.
नमस्कार। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सभागार में उपस्थित महानुभावगण, मेरा नाम संजय बापट है एवं मैं भारतीय कौशल विकास सेवा के प्रथम बैच का अधिकारी हूँ। मूलतः मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले से आता हूँ। इस समय भारतीय कौशल विकास सेवा के प्रथम एवं द्वितीय बैच के 43 सहायक निदेशक इस सभागार में उपस्थित हैं। महोदया, जीवन में कुछ क्षण अविस्मरणीय एवं अनमोल होते हैं। आज का यह क्षण निसंदेह मेरे लिए अभूतपूर्व है, जब मुझे आपके समक्ष इस ऐतिहासिक एवं भव्य सभागार में अपने प्रशिक्षण के अनुभव साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय कौशल विकास सेवा का गठन वर्ष 2017 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में संचालित कौशल विकास संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया। इस सेवा में आने के पश्चात हमें भारत में विद्यमान कौशल विकास की अपार संभावनाओं एवं इससे जुड़ी चुनौतियों का संज्ञान प्राप्त हुआ। हमारे प्रशिक्षण की संरचना 2 भागों में की गई थी। प्रथमतः फाउंडेशन ट्रेनिंग एवं तत्पश्चात फील्ड ट्रेनिंग। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मैसूर एवं केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में संपन्न हुई हमारी फाउंडेशन ट्रेनिंग के दौरान हमें प्रशासनिक कार्यशैली एवं नियमों की बारीकियों का ज्ञान प्रदान किया गया। इस समयावधि में हमने कई कौशल केंद्र, लघु उद्योग केंद्र, टूल रूम्स, विभिन्न संस्थान जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एनर्जी एंड डेवलपमेंट बैंगलोर एवं कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर इत्यादि का दौरा किया और उनकी उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों को समझा। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन, उद्योग जगत, कौशल विकास एवं नीति आयोग के विशेषज्ञों ने हमारा मार्गदर्शन किया। हमें मिले प्रशिक्षण ने हम प्रशिक्षणार्थियों को परस्परता के एक सूत्र में पिरोया। प्रशिक्षण के द्वितीय फेज में हम सभी को फील्ड ट्रेनिंग के लिए मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों एवं राज्य स्तरीय क्षेत्रीय निदेशालयों में भेजा गया। इस दौरान हमने विभिन्न जिलों की स्थानीय कौशल संभावनाओं एवं ज़रूरतों का अवलोकन किया। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित नीतियों के क्रियान्वयन को समझने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसने हमारे अनुभवों को अधिक समृद्ध किया। कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन प्लांटों में प्रशिक्षित टेक्नीशियंस की कमी को पूरा करने के लिए हमें राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त हम सभी ने अपने अपने राज्यों में प्रशिक्षुता मेलों का आयोजन किया, जिससे कई छात्रों को प्रशिक्षुता के अवसर प्राप्त हुए। महोदया, इस प्रशिक्षण समयावधि के संपूर्ण होने के बाद हम एक नवनियुक्त प्रशिक्षणार्थी अधिकारी से राष्ट्र एवं समाज के प्रति निष्ठावंत, नैतिक एवं संवेदनशील कौशल प्रबंधक के रूप में परिवर्तित हुए। अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से हम एक कुशल एवं कौशल भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। मैं आपको सादर नमन करता हूं एवं एक समृद्ध भारत का संकल्प लेते हुए मैं अपने उद्बोधन को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। May I now call upon Shri Rahul Jain, Officer Trainee of Indian Telecom Service, for sharing his experience. माननीय राष्ट्रपति महोदया, उपस्थित अधिकारीगण एवं मेरे प्रशिक्षु साथियों, सभी को सादर नमस्कार। महोदया, आज आपके द्वारा भारतीय दूरसंचार सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रेरणादायक संबोधन एवं आशीर्वाद प्रदान करने हेतु समय निकालने के लिए मैं राहुल जैन सभी प्रशिक्षु अधिकारियों एवं अपने प्रशिक्षण संस्थान NTI PRIT की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। महोदया, रायरंगपुर से राष्ट्रपति भवन तक की आपकी जीवन यात्रा हम सबके लिए प्रेरणादायक है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा नामक ग्राम से आकर आपके समक्ष मेरे और मेरे साथियों के प्रशिक्षण के अनुभव को साझा करना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। भारतीय दूरसंचार सेवा एक तकनीकी सेवा होने के कारण हमें आधुनिक संचार तकनीकों जैसे मोबाइल, सैटेलाइट, 5G, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तकनीकें जैसे साइबर सुरक्षा एवं दूरसंचार सुरक्षा का बहुआयामी प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने एवं नागरिकों के सशक्तिकरण में सहायक होगा। उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा इस प्रशिक्षण का अभिन्न अंग होता है, जिससे हमें वहाँ के नागरिकों की परेशानियों को समझने तथा उनको बेहतर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार सेना के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करके उनकी कठिनाइयों को समझने और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए सुझाव लिए जाते हैं।
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दूरसंचार सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका को कैसे बखूबी निभाया जाए, इस बारे में भी प्रशिक्षित किया गया है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी हेतु सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए चलाई जा रही सरकार की भारतनेट परियोजना के अध्ययन के लिए कई ग्राम पंचायतों का दौरा करके इस परियोजना को बेहतर बनाने के लिए भी सुझाव लिए गए हैं। तकनीकी क्षेत्र के अलावा लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी नीति शोध एवं नागरिक केंद्रित नीतियों के निरूपण के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। व्यक्तिगत स्तर पर सत्यनिष्ठा, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा जैसे मानवीय मूल्यों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। महोदया, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपके राष्ट्र के नाम संबोधन में आपने कहा कि भारत के युवा ही 2047 के भारत का निर्माण करेंगे। मैं बहुत हर्ष के साथ आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हमें राष्ट्र के विजन 2047 पर कार्य करने का भी अवसर प्रदान किया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के संवर्धन एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा प्रशिक्षण भी इसमें शामिल है। महोदया, आपका आशीर्वाद हमें सकारात्मकता प्रदान करेगा और भारत को विकसित देश बनाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। May I now request Shri Hemant Kumar, Officer Trainee of Indian Trade Service, for sharing his experience. आदरणीय राष्ट्रपति महोदया एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावगण, आप सभी को आदर सहित नमस्कार। मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं भारतीय व्यापार सेवा के 2021 सत्र का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की माननीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष मुझे अपने एवं अपने साथी प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण के अनुभव को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय महोदया, एक नवचयनित सिविल सेवक से कर्मयोगी बनने का यह सफ़र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र प्रशासन अकादमी के 96 फाउंडेशन कोर्स से प्रारंभ हुआ, जहां हमें अनुशासन, समय निष्ठा एवं अंतर सर्विस सहयोगिता जैसे मूलभूत गुण सिखाए गए। इसके अतिरिक्त एक स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास हेतु हमें एक स्वस्थ शरीर रखने की महत्वता से भी अवगत कराया गया। आदरणीय महोदया, फाउंडेशन कोर्स के पश्चात प्रशिक्षण के प्रथम चरण का कार्यभार भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को सौंपा गया, जहां हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विषय जैसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, विश्व व्यापार संस्थान, आयात निर्यात संबंधित नियम एवं माल और सेवा कर के बारे में ज्ञान प्रदान किया गया तथा विभिन्न विशेषज्ञों के अनुभव से सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त इस प्रथम चरण में हमें भारत के अद्भुत सौंदर्य को देखने एवं महसूस करने का अवसर भी मिला। हमारे देश के विभिन्न राज्यों की यात्रा के समय कई निर्यात संबंधित संस्थान जैसे एमपीडा, एपीडा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह एवं निर्यात प्रोत्साहन संगठनों ने हमें भारत के आयात निर्यात की उपलब्धियों, चुनौतियों तथा अग्रसर होने के मार्ग से भी अवगत कराया। माननीय महोदया, प्रथम चरण के पश्चात द्वितीय चरण हेतु हमें 3 माह के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में नियुक्त किया गया है, जहां हम मंत्रालय की कार्यप्रणाली को सीख सकें तथा उसे अंतर्निहित कर सकें। हमारे प्रशिक्षण का अंतिम चरण भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में संपूर्ण किया जाएगा, जिसके पश्चात इस 1 वर्ष में प्राप्त किए हुए ज्ञान व अनुभव से हम एक कर्मयोगी सिविल सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के मुख्य गीत की कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूँगा, जो हम सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में वीर, रखो उन्नत शीर, डरो ना। धन्यवाद। जय हिंद। It is my singular honor to request Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu, for her auspicious address. Senior officials from respective training academies, officers and trainees of the different services present here, ladies and gentlemen. I am very pleased to interact
with the young officers and trainees of Indian Defence State Service, Indian Telecom Service, Indian Skill Development Service, and Indian Trade Service. I congratulate all of you for successfully clearing and the prestigious competitive examination conducted by UPSC and also completing a substantial part of your training. I am told that some of you have already completed your training and are posted as officers. Dear young officers, I am told that your groups comprise officers from diverse social, economic, and cultural backgrounds representing India's unity in diversity. After becoming a part of the respective services, your primary aim should be to serve the nation and its people with utmost sincerity. In your journey as public servants, you will get opportunities to bring about changes. Such changes can transform the lives of our people. If you pursue the path of serving the people, I am sure you will earn a great deal of satisfaction from your job. Dear officer trainees and Indian Defence States Service, you may be knowing that the Directorate General of Defence State is the largest land holding agency under the Government of India. Besides managing these enormous resources as officers of IDES, you have the responsibility of municipal administration of the cantonment across the length and breadth of the country. I am told that technologies like satellite imagery, geo-spatial techniques, and artificial intelligence have already been adopted for management of defense state. Introduction of such initiatives is a step in the right direction. Technology has to be utilized to the maximum possible extent for effective administration of the cantonments. Dear officer trainees of Indian Telecom Service, technology has an even more central role to play in your career. India has undergone to telecom revolution during the last 2 decades. The launch of mobile telephony and faster internet network in India have enabled the country to tap its vast digital potential. It is important for us to have the best quality telecom and internet services in order to achieve the status of a developed country. In this background, the role of officers of Indian Telecom Services is very important. The domain of your assignment would include sensitive aspects like maintaining the security of telecom networks, communication intelligence, issuing and compliance of licenses, and other such functions. As we shift towards 5G mobile telephony, the leaps in the technological advancement and its implementation are going to be swift. It is your responsibility to keep abreast with these developments. Also, you should always remember the underprivileged sections of the society in the remote corners of the country. Your services can directly connect them to the mainstream by providing them access and connectivity. The recent success of Jan Dhan Yojana, Aadhaar, and mobile connectivity, called Jam Trinity, has been made possible through technology. Dear officers of Indian Skill Development Service, in order to benefit from our demographic dividend, our huge human resources need to be adequately skilled. This calls for special efforts from all of you. Skilling our people is critical as it would make our working age population productive and help in development of our country.
I am sure that your officers like you, will be instrumental in encouraging the skill ecosystem with your fresh approachment and thinking. Dear young professionals of Indian Trade Services, this is an exciting time to join your service. The Indian growth story today is very promising. As per a recent report of International Monetary Fund, India has become the 5th largest economy of the world. As we aim to become a $5 trillion economy, we look forward to young officers like you playing a significant role. The disruption to global supply chains due to COVID-19 and other geopolitical events have opened up new investment opportunities in various sectors. India remains an attractive FDI destination as the fastest growing major economy in the world. I am confident that your training at the Indian Institute of Foreign Trade has given you a historic outlook to understand the intricacies involvement in foreign trade and effectively deal with global changes. I expect you to utilize challenges as opportunities. I once again congratulate all the officers and trainees of all the services present here. I extend my best wishes to you all for a successful career ahead. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.